सेट पे हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर था. वी शेयर्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप. आई मेड न्यू फ्रेंड्स. फिल्मफेयर अवार्ड से लेकर SW अवार्ड से लेकर स्क्रीन से लेकर IIFA सब मैंने ग्रैब कर लिया. तो आई थिंक काफी चहल पहल तो मची उस फिल्म की वजह से. And coming back to the show, Crash Course, doing it with such great team, such great creator, writer, and sir, and the co-actors. पिछले सालों से मैं कुछ कॉलेज से आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ. राइट नाउ यू आर सिटिंग हियर एंड आई एम लाइक हाँ अब कुछ हो रहा है. My movie journey actually started with UTV Spot Boy. So we were the core team, myself, Vikas and Richa, we were the core team of UTV Spot Boy. सनसेट देख रहे हो, बैठे हो, कुछ कर रहे हो, कोई फोन नहीं आ रहा है आपको, पेजर नहीं बज रहा है आपका, अब बैठे हो, सनसेट हुआ, चने चबाए, सीन खाना खाया और निकल गए. All right, so we have with us the team of Crash Course, helmed by the man himself, Vijay Maurya. मैं जिनको बहुत महीनों से सालों से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ. तो बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड हंगामा पे. Thank you. थैंक यू. Thank you. एंड मैं आपको गली बॉय के टाइम से ढूंढ रहा हूँ कि आपको मुझे लगता है कि आपको आपको क्रेडिट मिला ही नहीं, बिकॉज जो आपने डिक्शन का जो आपने काम किया है गली बॉय में, अगर वो डिक्शन पे काम ना हो तो मुझे लगता है पिक्चर ही नहीं है. एंड आई फील दैट यू डिड नॉट गेट द ड्यू एट ऑल फॉर दैट फिल्म. A lot of that lingo could not have happened without Vijay Maurya. थैंक यू सो मच फॉर दैट. हाँ मतलब ड्यू तो मतलब फिल्मफेयर अवार्ड से लेकर SW अवार्ड से लेकर स्क्रीन से लेकर IIFA सब मैंने ग्रैब कर लिया. तो आई थिंक काफी चहल पहल तो मची उस फिल्म की वजह से. बीइंग अ बॉम्बे बॉय, मुंबई का होने के नाते, जैसे मैं हिंदी भाषी परिवार से हूँ, तो वो लिंगो मैंने बचपन से देखा हुआ है. 57 से मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे में, तो एक लिंगो का फ्लेयर होता है, जैसे मराठी, गुजराती, या एक मुंबई का भी एक लिंगो है, जैसे ऑटो रिक्शा वाले ट्रैफिक बोलते हैं ट्रैफिक को, बहुत ट्रैफिक है, तो वो लिंगो अंदर बसा हुआ है, तो वो गली बॉय में उभर के आया. आई थिंक वो करने में मजा आया, बिकॉज जोया जैसी उनका डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्ट किया. तो नहीं देखिए, डायरेक्टर हैं, सब एक्टर हैं, मतलब राइटर्स हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब मुझे एक जो चीज़ जो विच आई रियली थॉट अबाउट वाज कि चलिए ठीक है, राइटिंग है, वो एक लिखा गया है सर्टेन तरीके से, फिर ये कि दैट आपने उसको तर्जुमा कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया आपने इन दैट लिंगो. सो समवेयर मे बी जो ओरिजिनल राइटर है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. स्क्रीन प्ले जो लिख रहा है या लिख रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो नुएंस है, आई थिंक कि उसको भी साथ में इंटरव्यूज में बैठाना चाहिए था. दैट इज व्हाट माय ग्राउज इज. ओके, बिकॉज वो पिक्चर नहीं है. देखिए बहुत सी और फिल्में हैं जो कि बन सकती हैं, लेकिन वो गली बॉय जैसी फिल्म जो है बगैर उस नुएंस के नहीं बन सकती. इट इज नॉट, इट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट एक्चुअली. और उस पिक्चर में बहुत काम है, या विजय वर्मा का हो चाहे करेक्ट, यस, सबका जो है. इंटरनली एज इन इंडस्ट्री पीपल, दे हैव कॉल्ड मी होम एंड काफी सराहनीय बातें कही मेरे बारे में, बट ठीक है, अभी तो हो गई वो चीज. चलिए मैं, मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत दिनों से बड़ा हंसते, तो मैं थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. नहीं, आई थिंक इट्स यू आर एक्सीलेंट इन डार्लिंग्स, एज आई वाज टेलिंग यू दैट लाइक शॉर्ट वेल बैक. लेकिन वो किसी और प्लेटफॉर्म पे इससे पहले के सामने से मुझे फीलर्स आ जाए. और कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों का? टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ क्रैश कोर्स? सो मनीष, हमारे मनीष हरिप्रसाद क्रिएटिव, ये क्रिएटर है शो के, एंड आई हैव डायरेक्टेड द शो, एंड दीस आर माय एक्टर्स. Great. So we will start with the creator. Yeah, I mean, experience was great. We ended up writing this script for, I mean, we took inspiration from our own student lives. I think student lives, I mean, have the best stories in every person's life. If I ask you the best stories of your life, you would possibly go back to your student days. The friendships that you have in those days are the best of the friendships. So we decided to have write a script on this. We took it to Amazon, and it took them less than 20 minutes. The first meeting itself, Aparna said that this is a great concept. Go ahead, let's just. So we wrote it, and then I took it to Vijay, who's a writer himself and a great writer, like you just spoke to him. So I was very scared taking the script to him, because he's a writer himself, and I wanted him to direct it. So I was like, I don't know with what lens is he going to read the script. And he was the first audience in that sense, because no one else had read the script before that. So he was the first person to read the script. He said,
perfect. I love it, and I'm going to do it. So it's been a good journey. I think once you come up with a good script, the journey does become much easier. But however, coming to that good script is, I think it takes a while. It takes It a takes a while. lot of writing and a rewriting and No, yeah, apart from being a very fine writer and director, he's a fantastic actor. A very absolutely. entertaining actor. I It's have very known difficult to take Vijay off and I have your known eyes. Vijay and I have known each other actually for good 16, 17 years. We worked on a couple of films before. Actually, more than a couple of films before. We worked on ads together, and it was always on and off. So I would meet him. We would do an ad together. I was in an ad agency. Vijay was a freelance writer then. He wrote an ad for us. Then I was a producer at UTV, and I worked on a couple of films with Vijay as an actor. And then but it's always been we meet, and then we work, and then we are off, like the way it happens in this industry. Then we don't meet for 4 years or 5 years, and etc. And then again, so we've come back. So I think there is a little bit of a star connection between us. Great. Okay, what about you guys? Tell us something about your experience of Crash Course. Of course, I mean, this is especially I have a with Amazon Prime Videos I have a different journey क्योंकि मैंने जो पहला काम Amazon के साथ किया था I was screen पे for like 10 seconds and now after 4 years I'm doing a show where I'm there in like 10 episodes so definitely this journey is magical for me and it's definitely very personal and special. And coming back to the show Crash Course, doing it with such great team, such great creator, writer, and sir, and the co-actors is definitely amazing. Okay, what about you? I think it's been an कितना incredible जरूरी journey. है हर किसी का शुक्रिया अदा करना? मतलब अभी अंदर से आता है तो कर ही लेते हैं मतलब उन्होंने इतना किया है Right. तो आई थिंक बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ करने को मिला है. जो हमारे कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी हमसे सिमिलर थे और काफ़ी उन कैरेक्टर्स को प्ले करके हमको खुद के बारे में सीखने को मिला है क्योंकि हमने वो 2-3 साल जो इस क्रैश कोर्स की जर्नी में गुजारे हैं वो हमारे लाइफ के भी काफ़ी ऐसे ईयर्स थे जिनमें हमको भी बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे, मतलब सेम एज जो हम प्ले कर रहे हैं और अगेन मनीष सर, विजय सर उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला है. बहुत So it's been genuine really reaction है यार, बहुत genuine reaction है. मैं एक्चुअली इस वजह से कह रहा था कि दैट जैसे आपके जैसे शो का आपकी जो थीम है क्रैश, यू नो दैट यंगस्टर्स जो होते हैं वो जो एक रेस है और दैट उनको जीतना है उसमें हर तरीके से चाहे कुछ भी करके, तो उसी लिहाज से इन अ वे अगर हम अब जैसे इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को भी देखें तो अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में तो वो जिस तरीके का प्रेशर यंगस्टर्स एट टाइम्स ले लेते हैं अपने ऊपर कामयाब होने के लिए, जो आप you've seen a lot of people yourself and I believe आप casting भी आपने करी है. You've done casting as well for films? On this? Not No, on this, no, but no. you've never done casting, right? But you've seen a lot of Yeah. lot of youngsters coming and the sort of struggles. Vijay's that they done go a through. lot of workshops, acting Workshops, workshops हाँ, actual workshops, correct. with lot of youngsters. Exactly. तो do you see that वो बहुत बार जो एक enjoyment का फैक्टर है उससे ज्यादा वो कामयाब होने का जो एक फितूर होता है वो टेक ओवर कर लेता है and somehow they stop enjoying that process. जैसे आपके काम में आप enjoy करते हैं, you know, when you're acting you're literally enjoying हर एलिमेंट से आपके जो है खुशी निकलती है जब आप बोलते हैं या बात कर रहे होते हैं. That is something that आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है उसके बाद. स्टूडेंट्स का एक देखा है कि एक तो प्रेशर जताया जाता है कि उसको देख कितने मार्क्स ला रहा है, इसको देख, है ना, ये कौन सा क्लासेस ज्वाइन कर लिया तुमने, उसको देख. तो कंपैरिजन जो चलता है ना तो वो प्रेशर कुकर बनते जाता है इनके दिमाग में. और आज इतनी अपॉर्चुनिटीज और इतनी चीजें खुल चुकी हैं बच्चों के लिए कि जैसे जूते की दुकान में जाते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा जूता ले. जब तक आप लाके घर पे नहीं रखते, हाँ ये ले लिया मैंने, बिकॉज इतनी वैरायटी होती है. आप घड़ी खरीदने जाओ, दिमाग काम नहीं करता आपका. सो एजुकेशन में भी ऐसा ही कुछ हो गया है. ये कर लो तो ये मिलेगा, ये कर लो तो वो मिलेगा, यहाँ ये कर लो तो ऐसा कुछ हो जाएगा. तो वो प्रेशर में वो जो जर्नी में जो आपने कहा ना वो जो एंजॉय करने वाली बात है वो बहुत कट चुकी है वहाँ पर. तो वो उसी में लड़ते मरते रहते हैं कि कैसे कैसे नंबर 1 पे आ जाऊँ, कैसे क्या कर दूँ. और जैसे हमारी सीरीज इज अबाउट IIT एस्पिरेंट्स, तो उसमें 12 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं या
और Correct. सीट कितनी है उसमें? Seats actually 11. 1%. So Yeah. So इतना फर्क है उसमें, तो जो प्लान बी वाले हैं उनका क्या होता है? और इज देयर अ प्लान बी और नो, वो भी नहीं पता। 11,000 और 12 लाख, जस्ट इमेजिन। उतने ही पैशन के साथ लोग जुड़ते हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा। ये नहीं कि 100 में 70 सीट है या 70 स्टूडेंट है 100 सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल 10% वाला मामला है। 12 लाख और 1% वाला 11,000 सीटें हैं। तो ऐसी दुनिया में जान के भी बच्चे घुसते हैं, ऐसे कि मैं आऊंगा, पेरेंट्स घुसाते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। तो प्रेशर में फिर वही चीजें बिगड़ती जाती हैं। नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखें, वही प्रेशर फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। इंडस्ट्री में जो होता है, जो जब यंगस्टर्स आते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर्स डाले जाते हैं। अगर एक संदर्भ देखें, एक कॉन्टेक्स्ट देखें, तो उसके बारे में आपके तजुर्बे में आप कैसे देखते हैं? चीजें बदली हैं, दौर बदला है। जब हम लोग यंग थे, मैं मतलब एक्टिंग भी की है, मैं लिखता भी हूँ, ये सीरीज डायरेक्ट की है मैंने। सो उस दौर में फिर भी थोड़ा इजी था मामला। ड्रीम्स, एक स्ट्रगल के साथ जीना भी एक जीना होता था, है ना? कि आप सनसेट देख रहे हो, बैठे हो, कुछ कर रहे हो, कोई फोन नहीं आ रहा है आपको, पेजर नहीं बज रहा है आपका, आप बैठे हो, सनसेट हुआ, चने चबाए, सीन दाना खाया और निकल गए। फिर दूसरा दिन शुरू होता था। आज इतना कुछ डिस्ट्रैक्शन है, इतना कुछ आपको गैजेट इतना उकसाते हैं कि उठाओ, लगाओ फोन, भागो, ये करो, वो करो। तो वो प्रेशर बहुत बढ़ चुका है फिलहाल के यंगस्टर्स में। अब उसमें लाइफ ढूंढना। सो आवर क्रैश कोर्स टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट यारी दोस्ती, इट्स अबाउट शेयरिंग योर बर्डन, इट्स अबाउट रूममेट्स, इट्स अबाउट दैट कंपटीशन व्हिच दे हैव कि यार उसने 94 लाया था, मेरे सिर्फ 93.99, मैं कैसे वो 0.1% एक्स्ट्रा ले आऊँ मार्क। सो इट्स अबाउट दैट, और उसमें क्लासेस की राइवलरी हो रही है। तो 70-80% इट्स अबाउट स्टूडेंट्स, देयर लाइफ, देयर लाइकिंग, डिसलाइकिंग। एंड उस दौर में पेरेंट्स का प्रेशर, एफडी तोड़ तोड़ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको, तो वो भी एक जानते हैं कि वो एक एडेड प्रेशर है उनके सर पे कि नहीं किया तो पापा क्या सोचेंगे, निराश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप बताइए, you tell me your experience of crash course. My experience was wonderful. It was a new journey for me. Amazon Prime Video, it's like a very big platform, and I was very excited जब मेरे को I got to know कि Amazon Prime Video है. So I was very excited, and set पे हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा atmosphere था. We shared a lot of friendship. I made new friends. I made new relations, and I learned a lot from Crash Course from Aviral Bharti, the character I'm playing. So I think the journey तो बहुत wonderful रही है, and I'm just waiting for it to just you guys can watch it now and share the experiences with us. Great. Okay. All right. What about you? Amazon ओरिजिनल और मेरा पहला काम है, और मेरी एक तरह से स्कूलिंग हुई है, बिकॉज इससे पहले मैं थिएटर कर रहा था। और जब आप करते हो तो आपको जितना इकट्ठा हो जाता है ना आपके पास स्टॉक, वो निकालने के लिए जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, पहला कॉल आया, और मैंने देखा कि मनीष सर को मैंने सर्च किया कि अच्छा ये किया है, विजय मौर्या सर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आई वुड से मेरे लिए स्कूलिंग हो गई वहाँ जाके। जितना कुछ इकट्ठा किया था 20 साल में लाइफ का और काम का, वो सारा निकलता गया और इतनी आसानी से निकला बिकॉज ऑफ दीज पीपल। और अभी मैं ये बोलूँगा कि पिछले सालों से मैं कुछ कॉलेज से आपके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, राइट नाउ यू आर सिटिंग हियर एंड आई एम लाइक, हाँ अब कुछ हो रहा है, तो मेरे लिए मतलब समथिंग एल्स। You've been directed by Vijay Maurya. I think that is something which is a very good achievement for you. And okay, finally, how liberating is it for you as a creative person when you're having platforms which are not really making you conscious about that Friday, and making you conscious about the fact that you need a saleable star to sell whatever stories that you have in mind. How liberating is that for you as a creative person? I think it's you've used the right word. It's absolutely amazingly liberating. My movie journey actually started with UTV Spot Boy. So we were the core team, myself, Vikas and Rucha. We were the core team of UTV Spot Boy. And I think the focus on storytelling was in our DNA right from those days. Now with the advent of these OTT platforms, and I think the OTT platforms are looking more and more at stories being the heroes and stars for the shows. It's absolutely brilliant. One of the things that I do feel it allows us to do is it allows us to tell layered, complex and long stories. Absolutely. And multiple stories, which is how life
actually is. Right, backstories as well. So your stories actually imitate life more often on OTT platforms because you get 450 minutes, 10 episodes into 45 minutes. That's like about 4-5 films. Right. And that's the kind of so as a writer, it's more challenging because organically it becomes more and more difficult to write longer and longer. But I think it's also more satisfying. It generally takes us 3 to 4 months to write a film script, but an OTT script can take anywhere between a year to a year and a half, and it still is a lot more satisfying. So yeah, That's it's amazing. great. That's amazing. All right, so congratulations. The best part is that even before the launch of the series, you guys are having this smile, and you know that there will be a reach, which is Yeah, fantastic which is- for yeah. anyone. 240 countries. I mean, you could never have thought. I've worked in production and I've sent those reels out to those. तब भी मतलब गिन चुन के 12-15 these countries is what we reach with cinema. With OTT, you're reaching 240 countries. It's just That's amazing. All right, Amazing. so congratulations and all the best. Thank you. thank you, Thank you. thank you so much. That's all we have from Bollywood. Keep on watching.